पार्लियामेंट में, जहां पे उन्होंने ये कहा कि कनाडा और यूएस के बीच में फर्क ये है कि कनाडा ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है निज्जर की हत्या को लेकर, लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, जो इनपुट्स उन्होंने साझा किए हैं, क्योंकि भारत के लिए भी वो चिंता का विषय है, इसलिए भारत ने उन इनपुट्स को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया था जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो माना जा रहा है कि जो एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं, जो वो आते हैं, तो इस मामले पर जरूर वो बातचीत करेंगे, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि ये भारत का तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे कि भारतीय जो सरकार की पॉलिसी है, वो ये इस तरह की पॉलिसी सरकार की नहीं है, ये भारत साफ कर चुका है। तो ऐसे में भारत भी ये साफ कर देगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी इनपुट साझा किए गए उस पर विस्तृत जांच चल रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिरेंद्र, हमें तमाम जानकारी देने। संसद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ते हरदीप निज्जर केस ते एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने पन्नू मामले सबूत दिते। अमेरिका तो मिले इनपुट ते हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है। एस जयशंकर ने कहा कि साडी कौमी सुरक्षा लई भी अहम मुद्दा है। निज्जर मामले कनाडा तो कोई सबूत नहीं दिता गया, तो इसलिए दोवें देशों लई वखरा पहुंच जो है वो अपनाई गई है। एक सवाल के जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज जवाब। As the US is concerned, certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. So, because it has a bearing on our own national security, it was decided to institute an inquiry into the matter, and an inquiry committee has been constituted. Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or input. कनाडा ने सबूत नहीं दिता, कनाडा कोले सबूत है नहीं, हुण अमेरिका ने सबूत दिते, हुण तुसीं सारे फांसी टंग ते दस दिते। अगलियां ने तुहाडा गुप्ता नाल नहीं फड़ लिया, नाल तुहानूं दस दिता भी 3 आ है ते दिओ उन्हां नूं। असीं कमेटी बना दित्ती, सैट बना दित्ती, किट बना दित्ती। ओ तंबू जंबू लाना नहीं है, तुसीं सिट्टां किट्टां बनावो। ओ तंबू जंबू लाना, उत्थे खीर बना के खावे, दुध पीवे, इलायचियां पीवे, बड़े बड़े चोले पा के बह जावे, ते उसे स्टेज ते कातल कांग्रेसी बैठे होण, उसे स्टेज ते कातल जिहड़े आ ये आम आदमी पार्टी बैठी होवे, ते बादल छुंछना वजाई ने। अमरीका पुत अमरीका है, ठीक है। सिस्टम देखो किवें पतलिया। ओ जी पन्नू अतवादी है, टेररिस्ट है, एनआईए फड़न जाऊगी, असी जिहड़ी इंटरपोल नूं दे दिता। एनआईए ने किहदे नाल गल करनी सी? इंटरपोल ने किहदे नाल गल करनी सी? एफबीआई नाल। ते एफबीआई तुहाडा जवाई इत्थे खुद आ रहा, करो गल, दिओ सबूत। पन्नू अतवादी किवें? सारे कतल तुसी करना है, कतल तुसी कनेडा च करता, अमरीका च करदे, तुहाडे सबूत फड़े गए, गुप्ता थोड़ा फड़िया गया, पन्नू अतवादी किदां? सो आ हुंदियां गल्लां, आ हुंदा सारा सिस्टम, ये हुंदियां अकल दियां गल्लां। बंद करो जिहड़े साले बकवास करदे ने अमरीका कनेडा दे खिलाफ, बंद करो इन्हां सालियां नूं, जुलूस कढा के रख देणगे तुहाडी कौम दा। सो भाई जी बहुत वड्डियां गल्लां ते मैनू पता थोड़ा जिहा लेट हो गया, ते थोड़ा जिहा होर रुक जाओ। वकील साहब बहुत इंपोर्टेंट गल्लां अपने नाल लैके जुड़नगे, ते भाजी दी स्पैशल कॉल भी जुड़नी है। सो इंडिया टुडे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मीडिया है, ते शिव सरूर साहब उन्हां नूं गल समझ आ गई है। जिहड़े पहला हिंदुस्तानी कहते सी ना भी 2-4 खालिस्तानी है, 1-2 है तो गुत्त वाला है, ते साडे वाले भी पहला पग बनो, फिर खालसे बनो, फिर पंजाब की धरती ते आओ, फिर जागो सिर ते रखो, फिर चोला पाओ, फिर इधर दी निकलो उधर दी निकलो। नहीं, गल पोलीटिकल मसले दी है, गल पंजाब दी आजादी दी है, गल हिंदुस्तान दी ढूगणे चों किला कड्ढण दी है। अमरीका बैठ के कड्डांगे असीं, पग बन्नी जां ना बन्नी वो साडा धार्मिक मसला है, वो साडे ते साडे गुरु विच है। तुसीं कातल आ साडे गुरु दे, तुसीं कातल आ साडे पंजाब दे, असीं किला थोड़ी धौड़ च वेखो गड्ढदे किदां। अमरीका बैठ के गड्ढांगे। पन्नू दे पिछे कोई नहीं, पन्नू क्लाउन है, फलाना झिमका है, जे है वो है। नो कहंदा इट्स अ सीरियस मैटर। 5 मिनट दी है, सुनियो। Viewer, until a few weeks ago, Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu was a bit of a cartoonish character with his fake stern manner, jabbing at the screen in his videos. He cut the figure of a wannabe rabble-rouser desperate for attention.
The last few weeks have proven beyond any measure of doubt that while Pannu is still very much a caricature of what he perhaps hopes to be, one must admit that he is being taken much more seriously now than anyone thought he would, perhaps even he himself. Next week, viewer, the chief of America's Federal Bureau of Investigation will be flying to India to discuss the Indian investigation into allegations by the US that India hired assassins to bump off Pannu in New York City. This is by no means a normal visit. It's the first visit by an FBI chief to India in 12 years. Imagine that. And the fact that Pannu is one Khalistani terrorist profile, knowing Pannu's obsession with attention, ecstasy these days, even though he's like to be out of sight. Perhaps emboldened by the attempt, just issued an open threat to attend or before December the 13th, alleged plot to kill him, on which in 2001 was attacked by Pakistani terror before the United States is as follows. Do you interpret Parliament as a threat of terror? Even getting into whether Pannu even has the capacity to carry out such attacks, but this question must be asked. In my view, the United States can no longer hide behind the ruse that it is acting to protect a US citizen. Because is the Biden administration then suggesting that a US citizen proscribed as a terrorist by India, a terrorist who openly issues specific threats of terror, will not be acted upon? Viewer, you and I both know there's more to this. The least we can agree on is that Pannu is no ordinary American citizen. Whether or not Indian death squads were hunting him on American soil, the fact is the world sees and notices the alacrity with which the United States is using its institutions of government to protect and speak for a man who has published monetary bounties calling for the killing of Indian diplomats, warned about the bombing of Air India flights, and now most recently threatened to attack and bring down India's parliament. A large part of the American think tank